प्रभुपाद जय प्रभुपाद। ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you, Prabhuji. Ramchandra Prabhuji, thank you so much, Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु। So I'd like to invite and welcome all the devotees for today's very special session. तो आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज विशेष कार्यक्रम और विशेष संघ हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे अपने प्रिय श्री रामचंद्र सुंदर प्रभु जी से श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। And most of us in Kanya Desh, we have been blessed to have Prabhu association, affection, love, and so many teachings by his behavior. कैसे प्रभु जी यहाँ पर थे तो अपने आचरण से, अपनी सेवाओं से हम सभी को बहुत लाभान्वित किया उन्होंने, और हम सब उनसे सदैव प्रभावित रहते हैं। जैसे बताया गया है कि हम सब श्रवण करते हैं कि ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं जिनके संपर्क में कोई भी अगर आते हैं कुछ समय के लिए भी तो वो उनके अपने हो जाते हैं। सो रामचंद्र सुंदर प्रभु जी हमारे ऐसे भक्त हैं कि जो भी उनके संपर्क में आए, चाहे वो थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए, वो सब उनसे इतना प्रेम करते हैं, उनके इतने सुंदर व्यवहार के लिए, वैष्णव गुण के लिए। And now we heard that wonderful news that on the day of Narsimha Chaturthi, Prabhuji has been blessed to receive the second initiation from His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj. And as we know that Srila Bhaktisiddhanta Thakur Maharaj used to say that do not try to see Krishna, rather you serve in such a way that Krishna would like to see you. कि आप ऐसे सेवा करें कि भगवान आपको देखना चाहे। तो वैसे ही प्रभु जी ऐसी दिव्य सेवाएं करते हैं कि महाराज ने आके स्वयं उनको बोला कि आई वांट टू गिव यू दिस मर्सी इन द फॉर्म ऑफ दिस सेकंड इनिशिएशन। सच अ वंडरफुल न्यूज़ टू ऑल ऑफ अस, सो इंस्पायरिंग। एक श्लोक में देख रहा था प्रभु जी, एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में, जहां पर शौनक ऋषि बोलते हैं सुख गोस्वामी को कि ब्रूयो स्निग्धस्य गुरुवो गुह्यो अपियुत्य। तो वहां पर वो कहते हैं कि सुख गोस्वामी जी, आप यू आर सो ब्लेस्ड दैट बिकॉज यू स्पिरिचुअल मास्टर, बिकॉज ऑफ योर सबमिसिव नेचर, कि आपके आध्यात्मिक गुरु ने वो सारी चीजें जो एक जेंटल डिसाइपल के ऊपर गुरु उनको कृपा देते हैं, वो सब आपके ऊपर कृपा कर दी है, इसलिए हम आपसे श्रवण करना चाहते हैं। तो वैसे ही हमारे रामचंद्र सुंदर प्रभु जी हैं, वो इतनी सेवाओं में युक्त हैं, वहां पर यहाँ पर जाकर के यहाँ से परम पूजनीय भक्ति विकास महाराज की, अपने गुरु महाराज की और श्री प्रभुपाद जी के दिव्य अभियान में बहुत गुह्य सेवाएं दे रहे हैं, कई स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं और महाराज की बहुत विशेष कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो हम सब ने सोचा कि प्रभु से हम लोग ये श्रवण करेंगे कैसे ये जो गुरु को प्रसन्न करने का जो भाव है वो हम लोग भी प्रभु से सीखें, उसका कुछ रंच मात्र अगर हमारे अंदर भी प्रवेश आए तो हम लोग का भी जीवन धन्य होगा। तो हम सब ने प्रभु से ही विनती की आज श्रवण करने के लिए। तो आज बहुत समय के पश्चात हम सबको प्रभु जी का वाणी का संग मिलेगा, तो हम सब मिलकर प्रभु जी का हृदय से स्वागत करेंगे भगवान के नाम का आशय लेते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने इतना कुछ शब्द कहा जिसके लिए मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ। ये आपके बड़प्पन है कि आपने ये बातें कही। आपकी आशीर्वाद से अगर कहीं कोई एक दिन मैं आप जो गुण बताए अगर उसको मैं व्यतीत कर पाऊंगा तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। तो आशीर्वाद बनाए रखे प्रभु जी। आपने इतने साल शिक्षा दी है और कैसे वो शिक्षा को कैसे जीवन में कैसे उसका कैसे अपनाना है, वो कैसे उसको हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, ये सब आपने सिखाया। उसी पे चलने की प्रयास कर रहा हूँ प्रभु जी। आगे भी आप ही के शिक्षा अनुसार चलूँगा, क्योंकि कहते हैं ना, जिस चीज़ से कामयाबी मिल रही है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो आपकी दी हुई शिक्षा कहीं तो कुछ लेके आया है मुझे, तो निश्चित रूप से उसी को मैं अपनाता रहूँगा। तो भविष्य में भी
कुछ प्रगति कर पाऊंगा। Sorry, Prabhu, it's been a long time since I've spoken in Hindi, so I'm just stammering to find words. So please excuse me. तो वो आज्ञा क्या है प्रभु जी, मैं हिंदी में बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँ, ट्रांसलेट करेंगे, क्या अरेंजमेंट है बताएंगे तो उस हिसाब से हम लोग आगे कुछ प्रभुपाद जी की पुस्तक से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। प्रभु प्रणाम, हरे कृष्णा। Sorry, Prabhu, I was unmuted actually, Prabhuji. So, Prabhuji, अच्छा, we have, yes, अभी पूरे भक्त हैं Prabhuji. Today we have all the devotees from Braj Mandal, Gaur Mandal, everywhere, Prabhuji. So, the mixed devotees are there. तो अगर आप okay. दोनों भाषा हैं प्रभु जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। So I'll just continue, but I will not repeat, right, in Hindi and English, because I don't know, we'll not have much time. So what should I do? Should I speak what I speak in English again in Hindi, or I'll say some in English and some in Hindi? हाँ, ये भी सही बोला आपने। और यू वांट मी टू ट्रांसलेट बिकॉज, क्योंकि फिर समय हमारे पास कम हो जाए। आप दोनों भाषा में बोलिए प्रभु, जैसे आप बोल रहे हैं, हमको समझ में आएगा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ओम मंगलाचरण कृष्णम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गुरुभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे शीर्षक ये दिया गया है कि गुरु को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर हम देखेंगे तो गुरु को शिष्य से कौन सी वो चीज है जो उनको अधिक प्रसन्न करता है। This we understand from Srila Prabhupada books, like what pleases the spiritual master the most. So as I'm beginning to speak on this topic, I would also like to humbly submit to the Vaishnavas assembled today that I'd be quoting from Srila Prabhupada books, but very little realization of what I'm speaking, because I'm also trying to understand really what it means to please the spiritual master. तो निश्चित रूप से आज जो शीर्षक दिया गया है मुझे, उसमें सिद्धांतिक रूप से जो श्रील प्रपात के पुस्तकों में हम पढ़ते हैं उन विषयों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि मैं भी इस विषय को समझने के लिए प्रयास कर रहा हूं और पूरी तरह से इसको कहीं ना कभी तो मैं समझ पाऊंगा। लेकिन हो सकता है कि आज जो चीज़ें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि
वो मेरे भी समझ के बाहर है, लेकिन शिल प्रभुपाद के पुस्तक में है, शिल प्रभुपाद ने हमें ये सब दिव्य ज्ञान दिए हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए लाभदायक होगा। इसलिए उन चीज़ों को जितने बार हम पढ़ेंगे और मनन करेंगे, निश्चित रूप से शिल प्रभुपाद की कृपा से हम लोग निश्चित रूप में समझ पाएंगे, क्योंकि अतः से कृष्ण नामादि भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यदा। ये ऐसी विषय है कि मतलब हम एक औपचारिक रूप से पठन और स्वाध्याय से इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारे इंद्रियों के बल से हम लोग समझ सकेंगे ऐसी विषय वस्तु नहीं है। तो अगर ये समझ पाएंगे तो स्वयं एवं स्फुरत्यदा, वैष्णव और भगवान जब हमारे आचरण से प्रसन्न होंगे, तब उनकी कृपा से अगर हम इस विषय को समझ पाएंगे, वो हमको दर्शाएंगे हृदय में इन सारे विषयों को। प्रकाशन्ते महात्मनः, वो प्रकाश करेंगे इसके ऊपर। हम तो सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसको समझने के प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति उनकी कृपा से होगी। So that's the essence, that we will not be able to realize it unless, the acharyas, the mahatmas, they reveal it in our heart, looking at our sincerity and our efforts that we put in this particular execution of sadhana bhakti. So what pleases Srila Prabhupada the most? What pleases a spiritual master the most? Here, when we are talking about spiritual master, we are talking about acharyas, we have to understand that they are never alone. They are always connected to the Guru Parampara. In a letter to a disciple, Srila Prabhupada says, regarding serving your God brothers, this is a very good practice. The spiritual master is never without his followers. So to serve the spiritual master also means to be the servant of his disciples. When you want to serve the king, you must also serve his minister, secretary, and everyone who serves him. And to serve his servants may please him more than to serve the king personally. So the spiritual master is not alone. He is always with his entourage. We are not impersonalists. We take care of every part of the whole as much as one should take care of his hat as well as his shoes. Both are equally important for the upkeep of the body. I hope that you will understand this rightly. तो इस संदेश में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान अकेले नहीं है, गुरु अकेले नहीं है, वो अपने शिष्यों एवं पूर्ववर्ती आचार्यों से जुड़े हुए हैं। उनकी जब भी गुरु का संबोधन होता है, वो गुरून शब्द का प्रयोग करता है। श्रील प्रभुपाद, बहुत सारे श्लोक हम देख सकते हैं चैतन्य चरितामृतम में भी, जहाँ पे ये अभी मंगलाचरण में किया था, गुरून वैष्णवाम से, मतलब गुरु हमेशा अपने परंपरा से जुड़े, उनका पूरा अस्तित्व यही है कि वो उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो जिनका मूल स्रोत बनकर भगवान स्वयं उपस्थित है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो इस संदेश जो उनके शिष्य शिवानंद को श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि जैसे राजा अत्यधिक संतुष्ट होता है जब हम उनके साथ आए हुए सारे जो मंत्री, सेवक, उन सबका जब हम उनकी देखरेख अच्छे से करते हैं, तब राजा बहुत अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये गुरु जो है, आध्यात्मिक गुरु, वो कभी अकेले नहीं है, वो ऑलवेज विथ हिज एंटोरेज, मतलब उनके शिष्यगण, उनके पूर्वत्याचार्य, उनके गुरु और उनके गुरु, वैसे भगवान श्री कृष्ण तक सदैव उनके साथ।
तो जब यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु की को कैसे हम प्रसन्न करें, तो मतलब गुरु परंपरा को कैसे हम प्रसन्न करें। और शिल प्रभुपाद तो हमारे लिए सिर्फ इस्कॉन संस्था की संस्थापक आचार्य होने के नाते नहीं, इसलिए क्योंकि इस वर्तमान काल में इस गुह्य ज्ञान को उस सरल भाषा में प्रस्तुत किए हैं जिससे हम सब लाभ उठा रहे हैं। तो इस सेवा को देकर शिल प्रभुपाद को वर्तमान काल के नारद मुनि, ऐसे उनके शिष्य शिल प्रभुपाद का वर्णन करते हैं, क्योंकि शिल प्रभुपाद ने स्वयं इस विषय का आमोदन किया है कि इट्स द सेम मैसेज बट आई एम गिविंग यू इन अ न्यू वे, लाइक ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल. The message has been as it is given to us, but in a way that we can understand. That's the exceptional, say super excellent quality of Srila Prabhupada. And he makes things so relevant for us in today's day and age that everyone in the world have dismissed this, saying that this is something ancient, it's got no relevance to what we do or how we live in the present circumstances. But what Srila Prabhupada has managed to do is something so phenomenal that he has made, which everyone in the world has dismissed as, not practical. He has made it very practical. And we can see the advantage that we are able to extract from the teachings of Srila Prabhupada, that, the entire message of Bhagavad Gita has been made so simple for us that we can understand. The most phenomenal rendition of the Kali Yuga, which is a compilation of the entire Srimad Bhagavatam, has become so relevant and approachable to all of us because of Srila Prabhupada's Bhaktivedanta purpose. So that's the speciality of Srila Prabhupada. So that's why when we say what pleases the spiritual master, we're talking about what is preaching to Srila Prabhupada and all the previous acharyas in our glorious Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya in our tradition. So that's the focus. That should be our meditation. So that's why Srila Prabhupada has himself given us, a bucket list of items, which pleases him. And they say the effort which the spiritual master puts, in the upkeep and development of his disciple, it's tremendous. It sometimes, it kind of goes beyond our realm of normal understanding, that why would somebody take so much pain to uplift somebody with absolutely no qualification to receive this supreme knowledge. Just imagine somebody trying to, put a arm of 1,00,000 rupees in a beggar's bowl. Definitely the beggar would have not have expected, right? How much realistic a beggar will expect when he is, waiting for alms in front of a temple or any other public place. At the most 10 rupees, 50 rupees. बिना कोई योग्यता जाने, बिना कोई हमारी पूर्व जो संस्कारें हैं, हमारे जो वासनाएं हैं, उन सबको नजरअंदाज करते हुए, completely ignoring, completely dismissed,
तो बिल्कुल उन सब चीजों को छोड़ते हुए बस हमको कैसे हमारे उद्धार कैसे हो, तो ये विचार एक वैष्णव ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मतलब जो इतना बड़ा एक सेवा लेने के लिए तैयार हैं, और वो भी उन व्यक्तियों के लिए जो पूर्ण रूप से अयोग्य है इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो ये बहुत एक विशेष गुण होता है। और प्रोपादी इसको बताता है, यस आई मेड योर फॉर्चून। जब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि व्हाट वाज आवर फॉर्चून प्रोपाद दैट वी केम इन कांटेक्ट विद यू, Prabhupada laughed and he said, "No, fortune, what fortune you're talking about? You're all product of Kali Yuga. Absolutely, you don't have any fortune. I came and gave you the fortune. I provided that fortune." और इसी बात को हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 chapter 29 text 52. Srila Prabhupada in the purport says, the duty of the spiritual master is to instruct the disciple as long as he does not come to the understanding that this materialistic way of life, fruitive activity, is not at all beneficial. So this comes in the chapter where Narada talks to the chief of the Prachetas, King Prachina Barahi. Just imagine, the duty of the spiritual master is to instruct the disciple as long as he does not come to the understanding that this materialistic way of life, fruitive activity, is not at all beneficial. So I'm just putting myself in this situation. I'm such a rascal if I have to reach this understanding that this material way of life, fruitive activity, is not at all beneficial. It might take a few, not a few, it might take numerous lifetimes. So I am, with my insincerity, I am making my spiritual master to hold on to my upliftment for many births. But Srila Prabhupada said that is the duty of spiritual master. They have taken this headache upon themselves. एक आध्यात्मिक गुरु हमारे ऊपर, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि जब तक उनकी शिष्य को पूर्ण समझ हो इस विषय में, ये भौतिक जीवन और ये देहात्म बुद्धि में जो हम इस लाभ और पुण्य और इन चीजों में जो हमारी इंद्रिय सुख के विषय में जो हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारे हित में, वो हित के विषय नहीं है। ये हमें और इस भव सागर में बार बार जन्म लेने के इस चक्र से और ये हमें जकड़ लेगा अंदर, और इसको ऐसे होगा कि हम इससे निकल नहीं पाएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो हमें इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र से हमको छुटकारा देंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर मेरे जैसे कोई अयोग्य शिष्य अपने गुरु को कितना समय तक इस मेरे उद्धार हेतु वो इतने बड़े जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। सो दिस शोज द udarta, the kind of mercy that the benevolence which a spiritual master shows against his devotee, against this disciple. And we are talking about how to please such a personality. Well, in one sense, it's very difficult, because how can somebody with a very limited, who's actually a
blip in this whole creation of the Supreme Lord, somebody who's so tiny, Anu Atma, like they say. How can somebody who's so infinitesimally small serve the whole, the Vibhu? In logical terms, it doesn't happen. But it can still happen when we are able to give up our inhibitions and with full trust apply the teachings and the instructions that we have received from the acharyas and try to follow up in their life. Referring to purport of Chaitanya Charitamrita Adi Leela, chapter 7, text 91, Srila Prabhupada writes, spiritual master is not actually happy if the disciple brings him money. But when he sees that a disciple is following the regulative principles and is advancing in spiritual life, he is very glad and feels obliged to such an advanced disciple. So the topic is what pleases the spiritual master the most. And Srila Prabhupada is defining what pleases the spiritual master. It's a very wonderful shloka. Like how this is a conversation between Chaitanya Mahaprabhu and his spiritual master. Here the word that is used is actually the guru is feeling kritarth. He feels very much obliged. Bala hoila pae tumi parama purusharth tomar premete ami hoila kritarth. I'm so happy that you have found the supreme goal of life by developing love of God. Bala hoila paile tumi param purusharth. It means he has found what is the goal of life. And the guru is happy when the disciple has reached that stage where he has found his goal of life. Where a Swarup hoy. The Srila Prabhupada explains this further in the purport, makes it more easy and relevant for us. He breaks it down. Here we are talking about exalted personality. One is the Lord himself, which is Chaitanya Mahaprabhu. And if somebody has to be his spiritual master, definitely that person has to be super exalted. Otherwise, why would he be in that position of service towards the Supreme Lord? But Srila Prabhupada, he knows our condition. He knows how deceased we are. So he has broken down to something which is very, very relevant. And at least Baba come to this stage first. Say that Prabhupada is saying, Prabhupada संतुष्ट नहीं है जब कोई उनके शिष्य उनको ढेर सारा अगर क्या बोलते हैं लक्ष्मी या फिर कोई ऐसे धन प्रचार के लिए तो धन चाहिए लेकिन सिर्फ वो धन या कुछ ऐसे लक्ष्मी जब कोई शिष्य जाके श्रील प्रभुपाद को देते उससे वो संतुष्ट नहीं होता। प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक 91 is what 91. I don't know if I'm saying it right. Yes, correct, Prabhu, correct. Okay, some Hindi I'm still remembering. He says that and आगे बताते हैं कि जब उनके शिष्य ये 4 विधियों का पालन करता है, जो निषेध हैं उनको पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में वो प्रगति करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति इस दृढ़ता पूर्वक इस साधना भक्ति में प्रगति करते हैं, उस शिष्य के प्रति वो
I don't know. What is that word, Prabhuji? Same, I can use the same word, kritarth, in Hindi also. Yes, Prabhu. Kritarth, yes. Thank you, Prabhu. So this is what actually, Prabhu? कृतार्थ और कृतज्ञ दोनों एक ही। कृतज्ञ, yes. कृतज्ञ. So this is what pleases the spiritual master, how much sincere we are. Here the rules are for us to reach the stage where we can perform bhakti spontaneously without rules. The rules actually shape us so that one day, by Prabhupada's mercy, by Acharya's mercy, that we can reach that stage where we are able to do the same things spontaneously without having to wake up at the alarm of a mobile phone or a alarm clock, or somebody needs to push us to do this, go distribute books, go do this, go do that. What are you waiting for? There's so much service to do. Nobody needs to push. Where we are pushed by our own love to do such services. Prabhupada says when a disciple reaches that stage, then actually the spiritual master feels obligated to that disciples. Because Bhakti Siddhanta Saraswati, in the same purport, he says, even at the expense of all the properties, temples and matas that I have, if I could convert even one person into a pure devotee, my mission would be fulfilled. This Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada is talking. And Srila Prabhupada says this in a different way. He said, to make one person getting interested in Krishna consciousness. Srila Prabhupada says, I have to spend 3 gallons of blood to make one person even interested in Krishna consciousness. That is how much deceased people in the present day Kali Yuga are. That and we are so insincere that the spiritual master, the Vaishnava, has to spend 3 gallons of blood just to make us, little interested in Krishna. Why I'm talking about all this is where the entire world has lost hope on us. The Vaishnavas are giving us hope. Otherwise, आप देखिए ना आज के समय में कोई ऐसा नहीं है कि हमारा भला हो, ऐसे सोचने वाला ऐसे व्यक्ति आप उंगलियों में भी नहीं गिन सकते हैं, मतलब है ही नहीं। अगर मुश्किल से आप गिन भी लेते तो 1-2 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे, और वो भी इसलिए हमसे जुड़े हुए हैं क्योंकि हो सकता है हमारे अच्छे होने से उनका भी कुछ लाभ निकल जाए। मतलब कोई हेतु बिना हमारा कोई वास्तविक रूप में कोई सहायता करने वाला तो कुछ कोई है भी नहीं। और हम जीवन में कुछ अच्छे बने, इस विचार, अच्छे का मतलब है कि मतलब भौतिक विचारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक आध्यात्मिक प्रगति हो हमारा, हम इस भगवत संदेश को हम समझें और हमारे जीवन को उस प्रकार हम इंगित करें जिससे हम इस भौतिक चक्रव्यूह से हम लोग निकल पाए। इस प्रकार से हमको सहायता करने वाला सिवाय वैष्णवों के और कोई नहीं होंगे। और श्रील प्रभुपाद इस संदर्भ में कहते हैं कि मतलब एक को सिर्फ थोड़ा बहुत कृष्ण बाणामृत में उत्सुक करने के लिए, बस उनको एक बार सेंटर में लेके आने के लिए, और उनको मतलब जरा सा इसमें कुछ रुचि आए, उसके लिए 3 गैलन रक्त बहाना पड़ेगा। उसके बाद को एक बार जाके कुछ प्रसाद वसाद, इतने दिनों से बुला रहे हैं, चलो एक बार जाके हम देख आते हैं। कुछ नहीं अच्छा लगा तो कम से कम प्रसाद को कोई दोष नहीं देता है,
हर कोई बाकी चीजें उनको अच्छा लगे या ना लगे, बस एक विषय का तो बिल्कुल प्रशंसा होगी, प्रसाद का, चलो वो भी अच्छा। लेकिन इसके लिए भी बहुत देखते हैं, जो आप में से बहुत हैं जो इस प्रकार से प्रचार कार्य में जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से, और अपने परिवार और मित्रगण, जो सह कर्मचारी हैं आपके, जो यहाँ पे भी आप सर्विस करते हैं, उन सबको आप बताते होंगे, लेकिन मतलब रेस्पॉन्स जो है, मतलब उनसे जो जितना आपकी उनसे इच्छा है कि वो आए, उतना लोग नहीं आ पाएंगे। बहुत इसमें तपस्या है, और इस तपस्या के बाद आप कोई एक दो को आप मतलब उनके अंदर ये रुचि उत्पन्न होता है कि चलो एक बार आके देख लेते हैं। तो उसी प्रकार वास्तविक रूप में जब प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा आध्यात्मिक गुरु तभी प्रसन्न होता है कि जब दृढ़ता पूर्वक हम दृढ़ संकल्प हैं, जो हमें शिक्षा दिया गया है उसको निभाने में, और ये श्रील प्रभुपाद के बताए हुए इस विधि निषेध के अंदर जब हमारी साधना भक्ति का अभ्यास हो रहा है, तो अब हमारे जो प्रगति होती है इस कारण, उससे हमारे आचार्यगण वैष्णव संतुष्ट होते हैं। So we have an answer now from Srila Prabhupada that what pleases the spiritual master the most. So now at least we can safely say that I don't know what it is. Prabhupada has given us the secret that how this happens. So now the thing is, like, how do we develop that sincerity? How do we, what are the steps? How do we approach that? Because it says, na, dharmasya tattvam nihitam guhaya mahajanena gata supanta. This is the the it's so intrinsic, this knowledge, that we will never be able to figure it out ourselves, because the rishis themselves fight about this, because they don't meet on a common understanding of what Bhagavad Tattva is, because the Veda is so vast, you can have multiple interpretations of the same thing. So they say Shutayo Vibhinna. So they have Vibhinna means that they have numerous interpretations of this. Why? Because this is Bhagavad Tattvam Nihitam Guhayam. Because it's something which is top secret kind of a thing, extremely sensitive, and it's 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 supremely guarded. And when is it let loose? When we approach the parampara with sincerity. Like, any secret to be let loose to people, it happens only when we get close to that person. Right? कोई चीज अगर बहुत गुगिया है, अगर उसकी जानकारी हमें चाहिए, तो जब तक उनके निकट नहीं जाएंगे हम, मतलब उनसे हमारे कोई रिश्ता स्थापन नहीं होगा, एक एक दूसरे के ऊपर जब विश्वास प्रगाढ़ नहीं होगा, तब तक कोई रहस्य हमसे कोई नहीं बताएगा, है ना। तो उसी प्रकार ये धर्मस्य तत्व निहितम गुहाएं, ये तो बहुत गुह्य विषय है। ऐसी गुह्य विषय है जिसको अगर हम समझ लेंगे इस भौतिक जीवन में, तो इसका मतलब है हम पूर्ण रूप से समर्पित हो गए भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों में। और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है, भगवान बोलते हैं कि मैं उनके अधीन हो जाता हूँ।
तो मतलब कि भगवान हमारे बंदी होने के लिए स्वीकार हो जाते हैं। ये मतलब जो जो वो पूर्ण कर देते हैं ये अपने इस साधना भक्ति योगों को, और उस प्रेम के स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो भगवान को अपने प्रेम में वो बांध देते हैं। तो फिर भगवान उनके लिए, उनके रक्षा में तत्पर हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे गुह्य विषय सिर्फ वैदिक पठन और चर्चे से नहीं हो पाएगा। जब तक हम अपने आप को निकट नहीं लेके जाएंगे एक वैष्णव के श्री चरणों में, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, गुरु पदाश्रय तत्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेन गुरोर सेवा साधु वर्तमान वर्तना सद्धर्म पृच्छ भोगादि त्याग कृष्णस्य हेतवे। तो मतलब हम वैष्णव के निकट कैसे जाते हैं, तो इसमें पूरा वो प्रणाली दिया गया है। तो पहले क्या, गुरु पादाश्रय, पहले आश्रय लो इसके, एक वैष्णव गुरु के आश्रय, जो जो संप्रदाय में है, जो ऐसे संप्रदाय जो प्रामाणिक है। और उसके बाद ओके, आश्रय ले लिया, बस इसी में सब कुछ हो जाएगा? नहीं, आश्रय ले लिया और उसके बाद गुरु के एक छवि ला के हमने घर में लगा दिए हैं, और रोज उसको अगरबत्ती दीप फल फूल अर्पण नहीं। ये तो कोई यहाँ पे कोई ऐसे भावुकता वाली विषय जो है वो बिल्कुल यहाँ पे चर्चा नहीं होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे, जब अर्जुन भावुक होते हैं तो उसको कठोर शब्द से उसकी जो इस दुर्बलता है उसको भगवान श्री कृष्ण दूर करने के हेतु ऐसे कठोर शब्द प्रयोग करते हैं, है ना। कश्मलमिदम, श्लोक को भूल रहा हूं मैं, कुतस्वा कश्मलमिदम, ये ये कैसे मल तुम्हारे मन में भर गया है, मतलब इस प्रकार की नपुंसक वाली बात तुम बता रहे हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। तो एक ही क्षण में उसकी सारे कीर्ति को भगवान श्री कृष्ण ने एक क्षण में नीचे उतार दिया। विषमे स्थितम, इस प्रकार के विषम में पड़ गए तुम, ये दुर्बलता वाली बातें बताकर। तो इसलिए यहाँ पे गुरु पदाश्रय के बाद कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, आश्रय के बाद हरिनाम की दीक्षा, इसलिए कृष्ण दीक्षादि लिखा है। सिर्फ दीक्षा से भी ये पुण्य, उसके बाद दीक्षा तो प्रारंभ है, उसके बाद शिक्षणम ये मेन। सिर्फ दीक्षा लेने से भी कोई महाभागवत नहीं बन जाता। ऐसी विषय नहीं है कि सारी चीज जो है प्रभुपाद को करना है, बस हम बैठे रहेंगे आलसी बनकर, ऐसे नहीं है। हमारे भी योगदान होना चाहिए। हाँ, हम अयोग्य हैं, उनके कृपा से ही सब कुछ होता है, ये बात सही है। लेकिन फिर भी जो कोई इतना आलस हो, उसको साथ प्रभुपाद को भी, आचार्यों को भी क्यों देना है। तो एक हास्य घटना है जो शिल प्रभुपाद के लीला में हुआ था। जब ये अमेरिका में हुआ, एक बार ऐसे हुआ कि एक नवीन भक्त हैं, उनको शिल प्रभुपाद के साथ जब वो मॉर्निंग वॉक सुबह
की मंगला आरती और प्रसाद के बाद श्रील प्रभुपाद का ये दिनचर्या था कि वो कुछ समय वॉकिंग, क्या बोलते, टहलने के लिए, प्रभु जी याद है, टहलने के लिए, या ओके, यू ऑल नो वॉकिंग। सो प्रभुपाद निकलते थे, तो एक नवीन भक्त है, उनको भी इच्छा थी कि मैं आज प्रभुपाद के साथ, क्योंकि ज्यादातर जब ऐसे होता था तो प्रभुपाद की जो सेवा में जो भक्त जुड़े हुए हैं और उनकी जो वरिष्ठ शिष्य हैं वो नॉर्मली श्रील प्रभुपाद के साथ जाते हैं। तो लेकिन ये तो बिल्कुल नवीन भक्त हैं, एक हफ्ता ही हुआ है उनको आश्रम में प्रवेश हुए, लेकिन उनके हृदय में प्रगाढ़ इच्छा था कि वो श्रील प्रभुपाद के साथ जाएं। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, शिष्य के मन में ऐसे प्रगाढ़ इच्छा है, ये गुरु समझ लेते हैं। तो उस प्रकार से उस दिन ऐसे कार्य हुआ कि बाकी जो उनके साथ जाने वाला था उनको श्रील प्रभुपाद ने कुछ और सेवा में युक्त कर दिए, इसलिए उनको भी साथ में चलने का अनुमति मिल गया। और प्रभुपाद और उनके वरिष्ठ शिष्य पीछे बैठे थे, और आगे ये जो नवीन भक्त है वो जो गाड़ी चला रहे हैं उनके बिल्कुल पास में वो बैठे थे। और जो गाड़ी चलाते हैं उनको ऐसे हाथ से इशारा करके बोलते हैं सीट बेल्ट बांधो। तो उसने उनको उत्तर दिया कि देखो, सबका रक्षा तो भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, मैं सीट बेल्ट पहनूं या ना पहनूं क्या फर्क पड़ता है। तो ये श्रील प्रभुपाद की ने सुन लिया इस विषय को। श्रील प्रभुपाद ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, हर सबका पालन पोषण भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे हैं, सबका रक्षा भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम जैसे मूर्खों का रक्षण क्यों करेंगे भगवान श्री कृष्ण? Why should the Lord protect a fool like you? तो कहने का मतलब है कि whatever is our minimum that we have to do, nobody will do that which you will have to do, because only effort attracts mercy. When there is no effort, then there is no mercy coming our way. So it's not that all the responsibility is on the Vaishnava. Yes, the Vaishnavas play a very large role in our life. In fact, our entire progress is based on mercy, but the the effort attracts that mercy. इसलिए शिक्षणम is very, very important, that we are trained in this process. We should allow ourselves to be trained. Then he says, Prabhu Swami se Vishram Bena Guru Seva. So you have to be humble in service. Yeah, the Guru Seva is not just talking about the Vapu, the physical service of the Guru, which is very important, which is absolutely needed. It 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 gives us a lot of encouragement because we have that proximity, because the Guru is so merciful that he has allowed us to come closer to him, and in spite of all our disqualifications, he is still so gracefully attempting our half-cooked, half-baked. Sometimes our service and our eagerness of service could also cause him so much anxiety, so much discomfort, and he somehow or the other tolerates all that nonsense because he is more serious that we do some progress in bhakti. For him, he is willing to take that discomfort. We have seen people over eager to serve Guru. Okay, aaj mujhe I got an opportunity to cook for my Guru Maharaj. Oh yes, what are you going to do? What heavy, big kaju paste, this page, you're trying to make it so rich for the Guru, not even understanding whether this type of rich food will suit the weather that we are presently experiencing. See, everything in Sanatana Dharma is so scientific, right? There is a food for every ritu.
ऋतु है और हर ऋतु के अपने एक खान पान वो होता है, उस वो सीजनल। इसलिए हम देखते हैं हर ऋतु की सब्जी अलग, फूल फल अलग। और ये सब एक भगवान की समझना चाहिए कि मतलब भगवान की बहुत बड़ा विज्ञान है इसके पीछे। मतलब ऐसे ही नहीं कि धूप के समय में आम और कटहल ये सब आते हैं, बस ये इस समय के लिए हमारे लाभदायक है। हाँ, कुवैत का बात अलग है क्योंकि वो तो महीने वर्ष के सारे महीनों में सारे फल वहां पे मिल जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी द लॉर्ड हैज केप्ट इट लॉट ऑफ थिंग्स सीजनल. So the disciple who is eager to cook for this is a small example I'm taking. No, similarly, we have to be very sensitive of many things in service to Guru in Vapu Seva, because in our eagerness to serve, we should not be putting into hardship. And he's a exalted person, so he will tolerate. But why give that even discomfort? You're not good at it, step away, put somebody who is more qualified to do it. This is Radharani's teaching, right? She is the best, and she trains people to be the best in service of Krishna. The importance, the thing is, the best should be given to the Lord and his devotees. Okay, if I am incapable of doing it, then I should have the basic intelligence to step aside and give the service to somebody who's more qualified to do it. So इसलिए this Vapu service is a little tricky, but sometimes we get that opportunity because the Guru is so merciful that he is willing to take the discomfort, our over eagerness to serve, and yeah, and it ends up beneficial, and it ends up detrimental also. It's very beneficial, but our impurity of thoughts and mind can make that beneficial detrimental also. Why? Nishita achar kuti nati jiva hanshan labh puja pratishtha adi jata upashaka. So if that opportunity serve is used, if we accept it as a prasad of the Vaishnavas, then it helps us progress. But if that same opportunity is used by us for promoting our own prestige among the other devotees in our sangha, then what happens is it becomes a biggest anartha in bhakti, and it's a sure shot fall down from there. So that risk is also there. So the best of service, Vishrambena Gurur Seva, is to stick to the service of his instructions in his Vani. So serving his Vani will help us not trapped by this issue of Pratishta. तो इसलिए वाणी का जो सेवा है उसको प्रमुख बताया गया है, क्योंकि उसमें हम लोगों की जो अहंकार है वो कट जाता है। क्योंकि हमारे अहंकार को काटने के लिए ही वैष्णव जो हैं उनका जो भ्रमण, इस प्रचार हेतु उनका जो भ्रमण होता है, सिर्फ हमारे इस अहंकार को काटने के लिए होता है, और कुछ हेतु नहीं। जब ये वैष्णव इस प्रचार प्रसार के लिए जब वो पूरे विश्व को भ्रमण करते हैं, बस इसलिए भ्रमण करते हैं ताकि हमारी जो इस भौतिक संसार के साथ जो हमारी ये जो लगाव है, उस लगाव को काटने के लिए, और हमारे अहंकार को, हमारे अहम को काटने के लिए, इसी के लिए वो भ्रमण करते हैं। तो इसलिए गुरु सेवा में सबसे
उत्तम है जो उनकी वाणी, मतलब वाणी का मतलब है उनकी जो हमारे लिए संदेश है, हमारे लिए जो वो बताते हैं उसको अपनाना। तो साधु वर्तमान वर्तन, यहाँ पे बात है अनुवर्तन, मतलब जो हमें सिखाए हैं उसी के, उन्हीं पद चिन्हों पे चलना। उसमें हमारा कोई ज्यादा बुद्धि लगा के उसको कुछ हमको बदलने या फिर उसको मतलब इम्प्रूव करने, मतलब उसको कुछ और अच्छा बनाने, ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दिए हैं वो परफेक्ट है, बस उसी को हम लेके चलेंगे उतना पर्याप्त है। उसको कुछ ज़्यादा हमें अपने बुद्धि लगाकर कुछ उसको बदलने की, या फिर उसको हम समझते हैं कि उसको हम बहुत अच्छे से और उसको हम विकसित कर रहे हैं, लेकिन असल में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम हमारे इस छोटे सोच से उसका जो वास्तविक प्रभाव है उस प्रभाव को हम कम कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें कोई भी है शिल प्रपात की परपट, उसको वैसे ही हम लोग प्रस्तुत करें, उसमें ज्यादा कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ये साधु वर्तमान अनुवर्तन, बस उन्हीं के बताए हुए पे चलना है। तो ये वो स्टेप होता है जिससे हम लोगों का ये पूरा जो ये यात्रा है, साधक का जो यात्रा इसी प्रकार से शुरू शुरू होता है। और इसी में हमको हमारी गंभीरता और हमारी जो वो दृढ़ संकल्प, उसको हमें प्रदर्शित करना है। और जिस प्रकार से हम इसमें गंभीर होते जाएंगे, तो आगे से और हमारे लिए जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो बोलते हैं, तो एक पहले होता है जो जनरल इंस्ट्रक्शंस, वो सबके लिए है। जैसे शिल प्रभुपाद का उस परपट उस तात्पर्य में हमने देखा, following four regulative principles and sincerely trying to advance in devotion. So that's a general instruction. So specific instructions come when the guru feels that we are ready to take up, because he is the only person who is empowering. So I used to ask Brajapakash Prabhu often, during my early days. Not that I have reached somewhere. No, I'm still the same Kanishta mentality only even now. But I used to ask him, "Ooh, Maharaj asked me, how am I going?" Maharaj said, "What do you waste your time thinking about all this nonsense? The Guru has said you something and he will empower you to do it. You just follow his instructions, and you think you are really the person who's going to do it. He is going to get it done. You're just acting a instrument in his service, Baba. So don't break your head and don't think you are so great that Guru has asked you to do it, and you need to very intelligently figure out what needs to be done in executing that service. He will do that service himself. He will use you to be the tool in that service. Just allow you to be that tool, and that's all is needed, nothing more." So we talked about, that is the, in those times where you get some specific instruction, that could be for a very short thing, maybe just one task or a multiple of tasks. And as and when a devotee gets more fixed in service, then we might get some other instructions which are more which have more longevity. The sense that could probably end up shaping your service and the mission of Srila Prabhupada in the times to come.
So all this happens, but there is one common frequently asked question is in FAQs. The FAQ is like this. Okay, my Guru Maharaj has got so many disciples. Okay, when he comes to visit our yatra or when I go to take darshan of him, okay, I am not among that close quarter of disciples who interact with my Guru Maharaj on a regular way. I don't even know if Guru Maharaj, remembers me or whether he even knows my name. He get into all this, very mundane thoughts, you know, trying to bring down the stature of the spiritual master to, a forgetful person like ourselves. For this, Devamrita Maharaj gives many answers. There are a lot of, this is one of his favorite, seminar topics in which Maharaj elaborates so many different ways in which a devotee who has met a spiritual master only once in his life, that is during Diksha, after that he never had the opportunity to again meet his spiritual master. In reality, that devotee who is so distant, I'm talking about from a physical perspective. Maybe he lives in a different continent and the Guru Maharaj never visits that continent. So there is a geographical distance between disciple and Guru. I'm talking about that distance here. But in consciousness, that disciple could be the closest to the Guru. Because we are not talking about mundane material consciousness here. We are talking about divine Krishna consciousness, Krishna Bhavana Amritam. And since we are habituated to measure everything, based on our material vision, we think that, okay, if somebody is very far away geographically from his Guru, that means that he doesn't receive the mercy, and the person who is only every day waking and sleeping with Guru because he is in that service and close quarters of Guru is receiving service. Maharaj dismisses this absolute nonsense. The person can be in Guru service and he can be so far away in consciousness. And Maharaj gives the example of Kala Krishna Das. So there could be very many Kala Krishna Dasas today also serving many spiritual masters. He also had this great opportunity of very closely to be with Chaitanya Mahaprabhu. But in consciousness, he was far away, so he fell so badly executing that service. Maharaj says, the person who is very far can be consciously very close to the Guru. And Maharaj himself has given his own personal experiences. He has enlisted a few things like at some point where he felt that he needs to know something from Srila Prabhupada immediately because he's in a dilemma whether to go left or to right. And Maharaj said, okay, I went and prayed in front of Srila Prabhupada, who's there in every center of ISKCON. We have Srila Prabhupada sitting there. So Srila Prabhupada is never far away from us, right? So he said that, okay, I went and I prayed to Srila Prabhupada at that temple where Maharaj was at that point of time. And Prabhupada reciprocated. Because you're talking about a spiritual relationship here, right? We're talking about how the spiritual master wants to see us advance spiritually. So we are talking about something which is beyond the limitation of time, space, and circumstance. Because when we are trying to connect spiritually to Guru, so then it ulangita trivida sima, like Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, it goes beyond the limitation of time, space, and circumstance.
So you can be so far, but still so close to a Guru, because Guru Mukha Padma Vakya Chitete Kariya Aikya Arana Kariya Mani Asha. If this is the goal of my life, of this is what I'm endeavoring to practice on a day-to-day basis, then I'm very close to the instructions of the spiritual master. When somebody is so close to the instructions of the spiritual master, he is non-different from a devotee who is physically close to him, right? Just like a iron, when it's heated up to be shaped, it is, it's baked in fire and reaches a stage where, it becomes same like fire. It's hardly you can distinguish between iron and fire. So that's how a disciple can get so close to his guru when he is, so determined to execute the instructions of his guru. So the guru empowers him. He gives, like the Lord says, prayati samad bhavam. Lord Krishna says, I give them my bhava. I give him, that intelligence, that everything that my devotee needs. So similarly, the guru gives everything that the disciple needs in execution of that service. So it's got nothing to do with physical proximity or geographical proximity or any of those things. It just depends on how spiritually we are connected to the instructions of his words, how spiritually connected we are in helping him in his service in the mission of Srila Prabhupada. If that is our endeavor, then we can definitely please the spiritual master, because the spiritual master is pleased with that sincerity from his disciple. So, Prabhuji, I will end here. I am already like 10 minutes past the 1 hour time that was allocated. Begging my apologies. Yeah, I have this habit of very indisciplined person. It was so nectarian, Prabhuji. I'm sure that every one of us who are sitting here, we don't want to stop actually this nectar flowing from your wonderful lotus mouth, Prabhuji. इतने सुंदर से इतने दिनों के पश्चात इतने सुंदर रूप से आपके मुख से इतने अमृत प्रवाह हो रहा है. हम लोग और भी श्रवण कर सकते हैं प्रभु, अगर आपके पास समय है तो. It was so wonderfully you built up the topic, Prabhuji, and so nicely, and so many aspects you gave to us to contemplate, to think about it, and to really apply in our life. तो इतने कम समय में इतने अच्छे से इतने विषय वस्तु, कैसे हम आध्यात्मिक के ऊपर बोझ नहीं बने, और कैसे उनका इतना वो प्रभुपाद ने बताया जो कि इतने वो एक भक्त को बनाने के लिए उनको केवल लेके आने के लिए कितनी कठिनाई होती है, और फिर कैसे उनके हम वचनों को अपने जीवन में अपना करके उनकी सेवा कर सकते हैं, कैसे वो प्रसन्न होते हैं. ये पूरे विषय वस्तु को आपने बहुत सुंदर रूप से समराइज किया. एंड चूंकि हम सब थोड़े से, हम लोग को ये भी लाभ प्राप्त है, वी आर ऑल्सो फॉर्चुनेट, just not sharing from you have seen practically that how what you're speaking, most of it, how you applied in your life, how you try to serve this wonderful parampara of Srila Prabhupada and especially spiritual master. Up to what extent you go to serve, we have seen that in our life, Prabhuji. तो इसलिए आपके मुख से जो ये शब्द आ रहे हैं, तो हम सब समझते हैं कि अनुभूति से परिपूर्ण शब्द हैं. ये केवल ये शास्त्रों के शब्दों को आप दोहरा नहीं रहे हैं, बल्कि इनको आपने अनुभव भी किया है, अपने जीवन में अपनाया है, और उसका प्रतिफल हमको देखने को मिलता है. So it's like that now, Prabhuji, how the Lord gave one darshan to Narada Muni, and after that, when Narada Muni tried very hard to take the darshan again, it never happened. He kept trying, and Narada Muni said, "Baba, not in this lifetime."
right? So maybe there could be probably one odd instance where this realization has come, Prabhu. But that's one instance. After that, it's still No, no, Prabhu, no, Prabhu. We all know, Prabhu, that day by day we are very getting your distant. glories, your wonderful serving attitude. It's increasing day by day. And we all wish and pray that कि आप जैसे महाराज और श्री प्रभुपाद जी के इस दिव्य अभियान में निश्चित रूप से महाराज आपको युक्त करते जा रहे हैं और बड़ी बड़ी सेवाएं देते जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि ये जो अभियान है, ये दिव्य अभियान आंदोलन जो है, ऐसे भक्त जो त्यागी भक्त हैं, the devotee who really is willing to sacrifice everything. Because of such devotees, the entire movement is going on, so wonderfully that the conditions who like us also been given some opportunity there. So thank you so much. The reality, Prabhuji, वास्तविकता तो आप जानते हैं, लेकिन गोपाल बता दे कि 3 गैलन का रक्त, लेकिन आप और यशोमतीन प्रभु का बताना कितने रक्त मैंने ऐसे ही बर्बाद किया प्रभुजी, जो जितना समय और आपने मुझे दिया है, I don't know, I know I've definitely wasted so much of your blood, so much sacrifices both your families and yourself have done. The entire congregation. आप देखिए प्रभु जी, I will give some one example, just hint here now, कि हमारे यहाँ पे 100 की संख्या मतलब मैक्सिमम संख्या होती है। आज यहाँ पे 100 पूरा हो गया, फिर हम लोग को मैसेज डालना पड़ा कि प्लीज डू ज्वाइन इन द यूट्यूब। सो वी कैन, आप देखिए केवल समाचार जाते हैं कि आज रामचंद्र प्रभु का हमें संग मिलने वाला है, सारे भक्त बिल्कुल तैयार थे वो सब सुनने के लिए। ये श्रेय तो फिर अर्जुन कृष्ण प्रभु का अग्रेसिव मार्केटिंग में चलेगा। From every corner of Bangladesh, everybody is there. And I'm very grateful to Arjun Krishna Prabhuji to have this idea. Actually, he only gave this idea कि प्रभु हम लोग प्रभु से श्रवण करेंगे। This is he is a marketing genius. He can sell even Ramchandra Sundar Das. So that's his specialty. प्रभु बहुत बहुत आभारी है प्रभु जी आपके, बहुत। प्रभु आपके पास अगर समय है, if you have प्रभु 5 or 10 minutes, so we can take some questions. We can same time. But Prabhuji, I also want you and Yashomati Nandan Prabhu to add something on it, because I'm sure I would have missed a lot of things. बहुत सारे चीजों को मैंने आपने इतने कम समय में देख रहा था। सिर्फ समय के अभाव से नहीं, मेरे बुद्धि के अभाव की वजह से मैंने निश्चित रूप से मैंने छोड़ा होगा प्रभुजी। So please add also, because so many devotees you have said are joined today. So please add some. We are so grateful, Prabhu, so wonderful. That's what I was just thinking while hearing, that how nicely you connected all the wonderful dots actually, how you built up the topic and how you connected this wonderful dots. And so many wonderful points we have covered, Prabhuji. From Nectar of Devotion, from Chaitanya Charitamrita, from Bhagavatam. और इतने सुंदर रूप से ये समझ में आया है पूरे इस विषय वस्तु का कि कैसे हम लोग गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। So we are very, very grateful, Prabhuji. Yashomati Prabhuji, you'd like to add something, Prabhuji, or we can go for question answer? Krishna Dhanur Prabhuji, I want to hear something more, Prabhuji. Yes. So we can ask some question, because Prabhuji बोल रहे हैं कि अभी विराम दिए हैं, तो हम लोग प्रश्न के उत्तर के द्वारा प्रभु से और श्रवण करेंगे। सभी भक्तों को अवसर है। I request all devotees, if you have any doubt on today's topic, अगर किसी को कोई संशय है आज के विषय पर, कोई जिज्ञासा, या ऐसे भी आज हमको बहुत दिन के पश्चात प्रभु जी का संग प्राप्त हुआ है, तो आप लोग अपने हाथ, कोई भी हाथ खड़े करेंगे तो हम लोग उनको अनम्यूट कर सकते हैं और प्रभु से हम और कुछ श्रवण कर सकते हैं। प्लीज, कोई भी भक्त, एनीवन, प्लीज। असीमान कृष्ण प्रभु जी, प्रभु, यू लाइक टू से फ्यू वर्ड्स प्रभु? असीमान कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जय साधु, प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। After so long we are saying Prabhu ji. Actually, yes, I was thinking to ask one question, Prabhu ji, if you allow me. Prabhu, there is nothing that which you don't know that I will be saying, but if you want to hear what you know again from me, then I can attempt. Prabhuji, I never ask questions. Prabhuji, actually, in the, like, especially ISKCON, we have many Shishya Gurus, many spiritual, different spiritual masters, as well as nowadays Brahmacharis, like,
like preachers, sorry, yes, like Sisha Gurus, they have like use like some very inspirational classes, wonderful uh, discourse, and but when we are hearing, and sometime, many time, we, especially myself, neglects to hear from our own spiritual masters classes, and we lose our interest. How we can balance that, Prabhuji, and or how we can make that, at least we have to hear maximum from our Guru Maharaj instructions. As Srila Prabhupada, we have to hear more, but still, how, because we can see many inspirational talks from other Sisha Gurus. But then we get no taste or neglecting our Guru Maharaj's instructions or classes. How we can balance, not balance, how we have to get back the interest on that. Prabhu, in this, I will answer what I have heard from both Brajaprakash Prabhu and Yashomati Nandan Prabhu. Yes, Prabhuji. He said, when it comes to hearing, Yeah. first we have to start with at least one lecture of Srila Prabhupada. There should not be a day where we have not heard Srila Prabhupada or we have not read Srila Prabhupada. Yeah. Okay, if you are serious in this Krishna conscious practice, then hey, Prabhu, this is not a material voice, Prabhupada Vaikuntha voice. Yeah. Okay, so he is a Senapati Bhakta, like what our Bhakti Vinod Thakur says. He's Senapati Bhakta who has come for a very specific service in the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Because Mahaprabhu said, Pritiviti Achi Jatana Kara Digram Surasya Prashar Hoye Muranam. And this service is left for our Srila Prabhupada. That's why none of the previous acharyas took it up. We can say various reasons. Okay, they tried, they failed. All these are not the reality. The reality is, it was reserved for Srila Prabhupada because the previous acharya knows that, the Senapati Bhakta who is going to fulfill this particular prophecy of Chaitanya Mahaprabhu is going to be Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So it was reserved for him. And this is how Vaishnava acharyas in tradition, they work. They always leave something for the disciples. They don't, like Mahaprabhu did not. Mahaprabhu could have made everybody Krishna conscious, right? But he did not do that. He left for his followers because that's how they function. So isliye Srila Prabhupada becomes paramount, You have to hear him every day. Yes, yes, that is. And and secondly, our spiritual master, if we are already sheltered or initiated, then the second person whom we should be hearing is the spiritual master, because that is the voice that we inspired to take that initiation and shelter, right? Yeah. Okay, for us to have become serious or committed in the practice of Krishna consciousness, that voice, that personality, right? So he follows Srila Prabhupada immediately, just like a shadow follows a person or a living entity. The spiritual master very closely follows Srila Prabhupada because that personality, that voice is what inspired us to solidify our position in this mission of Srila Prabhupada. So these two personalities should always be our first two when we approach in our hearing. How much of our time we have devoted for hearing, these two personalities should be there foremost, and everybody else comes after that, Prabhu. Then you can use your intelligence depending on then if you are it all depends on an individual person here in terms of like how he approaches this whole subject of Shravana. So there, it can be either topic based or it could be every alternate days I hear Bhagavad Gita and Bhagavatam. That's how today I hear Bhagavad Gita lectures, the next day I hear Bhagavatam lectures. And this all these, or it could be topic wise. Okay, this month I'm going to hear only about Prahlad and Narsimha Katha.
Okay, so we can have those approaches in learning. So here you can have multiple choices and speakers who inspire you with their talks and discourses. So that becomes based on this, but they cannot take a prominent position. Like if you have a very limited time, then just give that time to Prabhupada and your spiritual master if you are already sheltered or initiated, and everybody else follows after that, Prabhuji, because you have to understand the mood and mission, okay, of your spiritual master in service of Srila Prabhupada. See, everybody is served there in their own unique way to the mission. It's like a big garland of different flowers, and each of them exhibit different color, different fragrances, and they have their individuality, definitely, but they all come together as a garland in service of Srila Prabhupada, right? So that way you have to help your spiritual master in his service to Srila Prabhupada. And how can you do that if you don't hear him? So after Srila Prabhupada, one should definitely hear his or her spiritual master, and then you have still more time to hear. Okay, you have the whole wide world of ISKCON, which is available in electronic and social media that we can access. So there you can pick and choose depending on your own, affinity and your own taste and flavor. And there are speakers, and choose those speakers who appeal to your mood of service or the way that you are. Because every one of us have our own psychophysical nature. So depending on that, you can pick and choose your other speakers and hear from them. Yashomati Nandan Prabhu, Brajapakash Prabhu, would you like to add something? No, Prabhu, thank you, Prabhu. Very nicely elaborated, Prabhu. Very wonderful point. As you mentioned that Srila Prabhupada, that's what we are supposed to be temperedly, Srila Prabhupada, because of him only we got this wonderful access to our spiritual master in the entire parampara, both the Bhagavatas. And like the parampara does not come in between the devotee and the Lordship. You see, all the parampara is inspiring us to come closer to the Lotus feet of Lord Shri Krishna. Similarly, Prabhupada take us closer to the parampara, and then our spiritual master take us closer to Srila Prabhupada. Similarly, our Shiksha Guru should be taking us closer to our Diksha Guru, actually. So when we hear from them, that the classes of our Shiksha Guru should inspire us more and more to hear and to understand the mood of our Diksha Guru. That's how this succession goes, Prabhuji. That's what my understanding is. So, as you mentioned very correctly, yes, definitely our first priority should be Srila Prabhupada and our spiritual master. And that shows our chastity. It is mentioned that, okay, before taking initiation, we can hear so many people. But once we are now married, so our first responsibility is to show our chastity that, yes, I'm so faithful. And, there was a wonderful article by His Holiness Bhakti Swami Maharaj, who delivers. Mm-hmm. So there he had mentioned this point very nicely, that who has a more influence in our life, it means who is inspiring more and more, that person contribution in our deliverance becomes maximum. And that's why, in order to have that influence, that inspirations, it's our responsibility, as you mentioned, that spiritual master, he's taking so much, pain just to bring us to this principle. So we should try to shoulder their burden by taking up this very seriously, by understanding their mood and their vani, and going closer to the Lotus feet of Sri Krishna. Correct. So that his contribution in our life will be maximum only and only when we are getting maximum inspiration from our Diksha Guru. And in order to have that, we have to have that very wonderful connections by the hearing process. So, thank you, Prabhuji. Thank you for elaborating this point. And very nice question, very practical question, Prabhuji asked it. Very, very practical question. Yeah, and it's very relevant today when we have, yes, so much available on YouTube, and we have become
very closer to almost every center in the world, especially after COVID. It's like an explosion that has happened in the internet media, that we have access to so many speakers and so many other things. Very true, very true. Very We can get lost. We can get true. lost. True. Thank you, Prabhuji. Yashomatin Prabhuji, any point you'd like to add, Prabhu? Krishna Dhanur Prabhu. No, Prabhuji. This Prabhu already answered in a very elaborate way, and then you also added. So we can go for any another question, Prabhuji. So we can go for that. आपके मुख से इतना अमृत आता है ये कथा का कि हम लोग को बस सुनने का मन ही करता रहता है। देखिए सारे लोग बस सुनने के लिए आतुर हैं। और ये हमारा क्या सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य कि देखिए मैं भी सोच रहा था कि इतना प्रेम जो होता है भक्तों से, जो प्रेम और संबंध, उसकी वजह से उनकी वाणी से जो श्रवण होता है उसमें बहुत बहुत आनंद आता है। एवरीथिंग बिकम्स सो पर्सनल बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल रिलेशनशिप। आपने इतना समय दिया है हम लोग को यहाँ पर, तो उसकी वजह से जो आपकी वाणी से आता है हमको लगता है कि बिल्कुल ही हमारे हित के लिए। आप जानते हैं हमारी स्थिति क्या है यहाँ पर, और एक शब्द जो आपके मुख से आ रहे हैं वो सब हमारे बिल्कुल परम हित के लिए है। So thank you, Prabhu, for always being so merciful and so affectionate to all of us in Kanyadesh. We are very, very grateful to you. And Prabhuji, please remind me also. I think it is, I don't know which. I know this is in this shloka that in that after Lord Shri Krishna imparts the teachings to Uddhava, 11th canto, the Acharya Mam Vijaniyam Navamarheta Karhechu. In that, I said, why the spiritual master is so glorious? I think the word used there is Ashraya Vigraha or something like that, because the Vaishnava is the Ashraya Vigraha. Like, we have Krishna who's the Archa, in his Archa Vigraha form, it can also give us that same shelter. But since we don't have that, our senses are so material that we can't reciprocate with him. So Krishna comes in the form of the spiritual master and gives us that same ability to reciprocate as an Ashraya Vigraha, to whom we can actually take shelter. Is it in that purport only, right? Yes, Or maybe I'm mixing somewhere. Very true. तो आश्रय विग्रह है, बिल्कुल सही बताया आपने। हमको जो विषय चाहिए कृष्ण, ये आश्रय विग्रह, इनके माध्यम से ही भगवान स्वयं आते हैं और इनके माध्यम से ही हमें वो आश्रय तत्व जो हमारा विषय है, विशेष रूप से विषय जी प्राप्त होते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और किसी हाथ उठा रखा है? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किसी बद का हाथ उठा हुआ है। ऋषभ प्रभु ने हाथ। ऋषभ प्रभु जी, साधु। यस प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु, प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या टंका तो ना रही बनाए देने की? हरे कृष्णा। प्रश्न प्रभु जी, ऐसे तो मैंने कोई प्रश्न पूछने का था, ऐसा मेरा कोई योग्यता नहीं है, तो आशीर्वाद दे दीजिए फिर। इसका योग्यता है आप वो दे दीजिए। प्रभु जी, आपने जब यहाँ पे कन्या देश में आपने प्यार दे रहे थे, तो वहाँ कुछ समय आपने एक बार कहीं यात्रा में गए थे, तो आश्रम में हम लोग को आपने जो कथा मायापुर हॉल में कथा खत्म होने के बाद हम लोग जाके आश्रम में कुछ डिस्कस करते, आपने बता रहे थे कि किसी जो भक्त ने आपसे पूछे थे कि प्रभुपाद जी का वाणी, अपना आध्यात्मिक गुरु का वाणी और प्रभुपाद जी का वचन को आपने किस तरह पालन कर रहे हैं बोल के आपने ये बता रहे थे। लेकिन मैंने कभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई बात, आपका वो जो बताया हुआ बात मेरे को याद आ रहा है। तो प्रभु जी, मेरा ये जो यहाँ पे मेरा मुंह खोलने का कारण ये है कि हम लोग ये सब प्रयास भी कर रहे हैं कि गुरु की कृपा बिना ये कुछ संभव नहीं है। तो मैंने भी यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु को कई बार दर्शन लेते हुए भी मैंने
प्रश्न भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा अयोग्यता के कारण से। लेकिन आपने गुरु को प्रसन्न किए हुए हैं, तो मैंने आपसे एक मतलब जो आज का जो कथा पे मैंने एक कुछ ले जाने के लिए चाहता हूँ कि आपने मुझे ऐसा कुछ आदेश दीजिए जो कि मैंने मेरा जीवन में तो अपना है कि मैंने अपना गुरु को प्रसन्न कर पाऊँ। प्रभु जी, ये मैं जिज्ञासा कर रहा हूँ, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, आपसे सीखना चाहता। धन्यवाद। प्रभु जी, वही विषय है ना जो श्रील प्रभुपाद ने हमको बताया कि मतलब उनको क्या चीज जो बहुत अत्यधिक प्रसन्न करता है। जब हम ये तीव्रता दिखाते हैं कि हमारे साधना भक्ति जीवन में कि हम तत्पर है कि मतलब ये जो विषय निषेध है, जो विषय हमारे लिए इस कृष्णा भावना अमृत जो ये यात्रा है उसमें हमारे लिए जो विषय प्रतिकूल है, उस विषय को हम त्यागें हमारे जीवन में, और उन विषयों को हम अपनाएं जो अनुकूल है इस अभियान में। जब हम ये गंभीरता और ये तीव्रता दिखाएंगे, यही चीज जो है गुरु परंपरा को संतुष्ट करता है। तो यही संदेश है प्रभु, सिर्फ आपके लिए प्रथम ये विषय को मैं स्वयं को बता रहा हूँ कि अगर जब तक हमारी ये संकल्प है कि इस विषय के ऊपर हम सदैव मनन कर रहे हैं कि जब यही एक विषय जो हमें अपने आचार्यों को प्रसन्न कर सकता है, तो फिर वही विषय हम लोगों का चेतना और चिंतन में होना चाहिए। और इस विषय को हम गंभीरता से निभाने के लिए हम लोग आतुर हैं, तो निश्चित रूप से सहायता मिलेगा प्रभु जी आगे हमारे शिक्षा गुरुओं से। दीक्षा गुरु तो आपको याद है हम सबको महाराज ने क्या बताया, मतलब हमको यशोमती नंदन प्रभु और ब्रजप्रकाश प्रभु के हाथों सौंप के गए थे। मैं इनके अब आप सबको इनके शरण में छोड़ रहा हूँ, उनके बताए हुए निर्देशानुसार आप अपने जीवन को अच्छे से चलाइए। बस यही है हमको करना है प्रभु जी, और क्या। महाराज ने तो बता दिया हमको करना क्या है, बस इनके आश्रय में रहना है और इनके बताए हुए निर्देशों के ऊपर जब हम गंभीरता से चलेंगे तो निश्चित रूप से वो महाराज को प्रसन्न करेगा। और वो जो विषय आपने पूछा था वो श्रील प्रभुपाद के शिष्या फालिनी माता जी ने वो मुझे उन्होंने ये विषय पूछा था, ये कहाँ पे, सोमनाथ व्यास पूजा महोत्सव में। तो ये वैष्णवों का गुण है, क्योंकि वो हमारे मतलब हम कितने कमाए हैं, हमारा बैंक बैलेंस क्या है, उन सब से उनका कोई लेना देना नहीं। तो यही चाहते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद की निर्देशन को कितना पालन कर रहे हैं। और माता जी का भी देखिए कितना सटीक था उनका प्रश्न, प्रभुपाद के इस अभियान के लिए कितना प्रयास कर रहे हो, कितना सेवा कर रहे हो, और महाराज को कितना सहयोग दे रहे हो उनके सेवाओं में। ये महान गुण है प्रभु जी, वो याद दिलाते हैं, क्योंकि मेरे जैसों का तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। थोड़ा सा अवकाश मिल जाएगा तो बस अपने ही इसमें खो जाऊंगा। तो इसलिए ऐसे वैष्णव हमारे जीवन में हो, ये बहुत अनिवार्य है, ताकि वो हमें सदैव याद दिलाते रहें। और जैसे जैसे हम थोड़ा दूरी रख रहे हैं, वापस हमके खींच कर पटरी में डालने के लिए वो जरूरी है। ओके प्रभु जी। रामचंद्र प्रभु जी, आपको बहुत लेट हो रहा होगा वहाँ पर ना, 11 बज रहा होगा वहाँ पे, राइट प्रभु जी? पता नहीं प्रभु जी, 11 बज रहे क्या? हाँ, ऑलमोस्ट, यस। 5 मिनट और समय लेंगे प्रभु, 5 मिनट और। तो मैं विनती करता हूँ
नाम अवतार कृष्ण प्रभु और जड़छोड़ कृष्ण प्रभु अर्जुन कृष्ण प्रभु जी, आपकी कृपा से हमें ये स्थान मिला है। आप प्लीज इफ यू वांट टू से फ्यू वर्ड्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। साधु, हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। Thank you for your wonderful association, Prabhuji. So, Prabhu, the love and care you give to Kanaya this devotee, we can see the Zoom is filled out and all YouTube also devotees are watching, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji. Thank you. Prabhu, I am already an egoistic person and you are fanning it. No, Prabhuji, no. आज की अभी यहाँ पे केवल कन्या देश से नहीं, भक्त लोग कन्या देश, भारत और फिर टर्की, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, यहाँ से सब भक्त जुड़े हुए हैं। आई कैन सी कृष्णदास कविराज प्रभु और बहुत से भक्त जो बाहर गए हुए हैं वो लोग भी जुड़े हैं, सब जुड़े हुए हैं। And it becomes international Sangha now, Prabhuji, by your mercy. Right, Prabhuji. Yes. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. So when you say this, I always try to remember, the short story which Brajapakash Prabhu used to say often in classes, that story of the donkey who takes the dolls to the market. So much respect was given to the donkey only because, the donkey was carrying, the dolls of, different God and, different Leela, different avatars, Narasimha, Vigraha and all those things. But the stupid donkey thought, okay, everybody is respect. One day it was taking some utensils and nobody offered any respect. So the donkey said, what's wrong with this market people? Every time I come, they offer me danda words. There is so much jejekar that happens, and today nothing. Everybody is completely ignoring me. The donkey said, what, you stupid fools, you people? How come you forgot? I'm the same donkey which you used to give so much respect. What happened today? And people said, you idiot. All the respect was for the, the beautiful vigrahas that you were carrying and not you. So we are also Prabhupada's donkey, Prabhuji. So everything, if anybody is glorious, then it's Prabhupada. His mission is glorious. Prabhupada is glorious. Yes. He's faithful for servants are glorious. I am the donkey. Simply, also getting some collateral, what do you say? Some collateral good words, because somehow or the other, by all your mercy, I'm engaged in some little service. Thank you, Prabhuji. Vaishnavas are like, Prabhuji, like, Vaishnavas don't like the fame. At the same time, the true Vaishnavas cannot stop the fame also. This is, we can see, Vaishnavas glorified. Even though the Vaishnavas doesn't like, they are glorified. Prabhuji. Yeah, that's true for Vaishnavas, Prabhu, not for neophytes like me. Correct. Thank you, Prabhuji. Thank you. Prabhuji, yes, Prabhu, please, Prabhuji. Prabhuji, Hare Krishna, Danut Pranams. Sadhu, Pranam, Hare Krishna. सभी वैष्णव को धन्यवाद प्रणाम्स। प्रभु जी, सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको अति हर्ष हुआ, ये सुंदर समाचार प्राप्त हुआ प्रभु जी, और हमारी हमेशा प्रार्थनाएं हैं कि जिस प्रकार से आप गंभीरता से इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आगे और उत्साह बढ़े और हमें आपसे उत्साह इसी प्रकार से मिलता रहे प्रभु जी। मुझे एक विचार आ रहा था आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कि जैसे हम भक्ति मार्ग में प्रयास करते हैं प्रभु जी, तो हमारा जो गंभीरता है उसको देखते हुए गुरु और गौरांग की कृपा से हमें इस प्रकार से अवसर प्राप्त होते हैं कि हम इस अभियान में कुछ अपना नगण्य जो भी है वो हम अपना कुछ इसमें योगदान कर सके। तो प्रभु जी, मैं आपको बहुत स्मरण करता हूँ जब मैं इस्तिकलाल के भक्तों से मिलता हूँ, खासकर मधुर प्रभु से, कि इतना गंभीरता से जब वो पालन करते हैं और स्वयं इतने सुंदर सहिष्णु भक्त हैं, तो किस प्रकार से गुरु गौरांग की कृपा से देखिए प्रभु जी कि वहां पे
हम आपको स्मरण होगा, हम सब जाते थे वहां पे, बहुत पुरानी बात है ना। जी और जी कैसी कृपा हुई कि इतने गंभीर भक्तों को आपके द्वारा मार्गदर्शन मिला और वो इस मार्ग पे चल रहे हैं। वहां पे 3 दीक्षित भक्त हैं और उनको देखते ही सबसे पहले तो उनके गुणों से हम प्रभावित होते हैं कि इतने विनम्र जो हैं गुण, और इतनी गंभीरता से पालन करते हैं, और परिस्थितियां भी हैं वो कठिन है। जी जी और तुरंत आपका स्मरण आता है, हम जब भी उनसे मिलते हैं आपके बारे में चर्चा करते हैं कि देखिए प्रभु जी के माध्यम से, उनके संग से आप इतने उत्साहित हुए कि आपने अपना जीवन बदला। तो इस प्रकार से प्रभु जी ना सिर्फ आपने अपनी वाणी से लाभान्वित करते हैं, परंतु आपने जो यहाँ पे जिस प्रकार से सेवाएं दी और भक्तों के जीवन बदले, तो उससे हमें बहुत बहुत ही एक उत्साह बढ़ता है कि इस प्रकार से हम भी कुछ अपना इसमें मिशन में कुछ योगदान करें और आपका संग प्राप्त करते हैं प्रभु जी। तो यही हमारी अभिलाषा है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। असल में प्रभु जी मुझे वहां से बहुत प्रेरणा मिलता है प्रभु जी। मैं क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, प्यासा कुआं के पास जाता है, जिसको जिस चीज की जरूरी है वही जाता है। मैं इस प्रकार से बहुत क्या बोलते हैं वो, व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर दैट, बहुत सेल्फिश आदमी हूँ प्रभु जी। दैट्स व्हाई इवन हाफ एन अपॉर्चुनिटी जब मिलता है तो मैं आलस नहीं दिखाता हूँ। जब मुझे मतलब जब शोएबा जाना है, या फिर वो साबिया, या फिर मंगफ में जो हम लोगों की आश्रम है, वहां पे बाबू तो मैं तो मेरा तो बस सैद्धांतिक समझ है, मतलब ये उच्च विचार और सरल जीवन, एंड दे आर प्रैक्टिकली लिविंग दैट लाइफ। आई कैन ओनली read about it and think, okay, maybe sometime in some birth maybe I will achieve that kind of but the practical, pratyaksha agamam garmyam, you can actually see they are living that particular life. Oh, this is all. Oh, I am a very selfish person, Babu. I just go for my personal to fulfill my personal ambitions. यस प्रभु जी। जो भक्त अपने बारे में इस प्रकार से सोचते हैं कि मुझ में कोई गुण नहीं है, उन पे इतनी कृपा है प्रभु जी कि वो हमेशा सहिष्णु रहते हैं। जैसे ब्रज प्रकाश प्रभु ने शुरुआत किया ना कि सौम्य, वेरी जेंटल, द वे यू स्पीक प्रभु जी, इट रिफ्लेक्ट्स कि आप कितने विनम्र हैं, सौम्य हैं। तो अपने आप में ये विचार रखना, मतलब आप और अपनी कृपा का जो पात्र है और बड़ा करते जा रहे हैं प्रभु जी। जस्ट टू थिंक आवरसेल्व्स दैट I am seriously and sincerely stating facts, Prabhuji. I am not, one bit exaggerating, because I needed, to keep reminding myself, okay, this life which Prabhupada saying is the best suited for practicing Krishna conscious. I said the more I go there, okay, sometime it will actually, fall in place in my life also. And you see, Babu, you have been there. yes If you ask them to pack and leave that place, it will not take them more than 5 minutes to pack up and leave. That's all that's enough for them to to lead a very contented Krishna conscious life. You can see how simple they have kept their lives. yes And Prabhuji, yes. for me to just dust one room, it takes half a day. I have accumulated so much things when I was there. Yeah, Prabhuji, again, thank you from our hearts. You spared so much time, and also at late at night. So very, very grateful, and so much to learn from you, Prabhuji. I personally, I'm learning and getting benefited. So I can only reciprocate. That is my endeavor. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna, Babu. Thank you for giving me your resources. थैंक यू प्रभु जी। वैसे तो सारे भक्त आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास समय कम है, वहां पर रात्रि बहुत हो रही है। तो यशोमती प्रभु जी। Yes, Prabhu, I like to hear also from Prabhu. Is very silent. कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। सुनने को मन कर रहा है प्रभु जी, इसके लिए मैं ऐसे ही
साइलेंट नहीं रहूंगा तो फिर मैं सुन नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं तो प्रभु थैंक यू जी, सो मच प्रभु जी। एंड आपको तो पूरा सेवा है, प्रचार, टीचिंग द स्ट्रीट, दिस इज योर मिशन। पता नहीं प्रभु जी, प्रभुपाद आप सर्विस। जब आप ये बोल रहे थे कि वो प्यासा कुएं के पास आता, तो मुझे ये लग रहा था कि आप मुझे ही सुना रहे हैं। तो मुझे तो इतना समय हो गया प्रभु जी, लेकिन वो जितना ज्यादा समय बीतता जा रहा, तो मुझे यही अनुभूति हो रहा प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मैं यदि शुरुआत से और अभी तक ऐसे देखूं, तो यदि ये भक्तों की कृपा नहीं होती, और ऐसा जो यहाँ पर जो भी एक परिस्थिति है, उसमें यदि हमको श्रील प्रभुपाद ने नहीं रखा होता, भगवान ने नहीं रखा होता, तो पता नहीं मतलब क्या मतलब स्थिति होती थी। जी तो ये तो मुझे मतलब जैसे जैसे समय और जा रहा प्रभु जी, वैसे अनुभूति हो रहा है कि शायद ऐसे लगता होगा कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इन वैष्णवों की जो कृपा है, जो इतना प्रेम देते हैं प्रभु जी, और जो अयोग्यता होते हुए भी और वो लोग इतना प्रेम दे रहे हैं प्रभु जी, तो वो बाध्य कर रहा है कि कम से कम मैं मतलब ऐसे जो वैष्णव हैं, उनकी जो सेवा है, या उनके जो अनुगत्य है, उनकी शरण में मैं रहूं, तो इतनी प्रेरणा तो ऐसे भक्तों से प्राप्त होती है प्रभु जी। तो जो आपने बताया वो मुझे लगता है ऐसे कि ये अन्यथा यदि ये भक्तों का ऐसा कुछ जो संग नहीं होता, ऐसा कुछ यहाँ पे हमको परिस्थिति नहीं होती, तो फिर हम लोग क्या कर रहे होते। तो प्रभु जी, और जैसे आप जब तक यहाँ पर थे, तो जितनी सेवाएं आपने दी हैं प्रभु जी, जितना आपने जैसे प्रभु जी ने शुरुआत में बताया कि आपका जो अल्प संग भी है, वो भक्तों को इतने प्रेम से वो बांध लेता था। तो वो गुण तो अभी तक मतलब हमारे अंदर में, मेरे अंदर में तो वो बिल्कुल भी अभी तक नहीं आ पाया है कि